Hello, literature lovers. Welcome to LITTWIT CLUB. Hope you all are doing great. And today we will continue our mock test series on SLST 2025. So here is the very first question. The star in the sky and the violet near the stone both serves to represent Lucy's silence and obedience. Contrast Lucy with nature symbolizes Lucy's rare and unnoticed beauty, or so Lucy's dominance over nature. So it is very clear that it symbolizes Lucy's rare and unnoticed beauty. In the poem, the world is too much with us. Sordid boon means people's attainment of money or wealth which is detrimental to their soul or well-being. Or boon is actually a curse in disguise, displeasure or discomfort. So basically ये सॉलिड बोन हमारे एबिलिटीज के लिए है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, बट हम अपने आप को गेटिंग और स्पेंडिंग में ही खर्च करते जा रहे हैं अपने माइंड को. तो यहाँ पे एक तरीके से बोन जो है वो कर्स के फॉर्म में, डिस्गाइज फॉर्म में है. Kate's Ode to Autumn introduce a scene of sunset glory in the first stanza, second stanza, third stanza, or none of above. So it is in third stanza. Falder was arrested on 28th of July, Tuesday, 17th Feb, Wednesday, 11th June, or 18th May, Tuesday. So he was arrested on 18th July, Tuesday. Figuratively, the white man in the lagoon plays the role of a silent observer, an omniscient narrator, the author's alter ego, a silent listener of the tragic suffering of the protagonist. So there is a confusion कि हम silent observer भी कह सकते हैं, but he is actually not observing, but he is also listening the tragic story of Arsat. What should be the nature of the language in writing? So this is according to L.A. Hill. The language should be simple and conventional in tone, or language should be elaborate and ornamental, or language should be rhythmic and metaphoric, or none of above. So according to L.A. Hill, language should be very simple and conventional in tone. Most blameless he is. What particular quality is referred to here by the word blameless? So this line is from Ulysses, and it is said by Ulysses to his son Telemachus. So what this quality refers to? So Telemachus is a soldiery, Telemachus is a superhuman, Telemachus is a noble-minded, or Telemachus is as spotless as God. So he here compared his blameless with a noble mind. Jack and Jill went up the hill to fetch a dash of water. So it is a very famous poetry. So whether it is pale, pile, pale, or peel, so it is pile. I had exactly 63 pounds in the bank. The complex form of the simple sentence will be 63 pounds was the exact amount I had in the bank. The amount I had in the bank was exactly 63 pounds. I had exactly 63 pounds which I kept in the bank, or none of above. So the complex will be the amount I had in the bank was exactly 63 pounds. I was surprised his result, and it came as a pleasant surprise for the whole family. So whether it is I was surprised by, I am surprised at, I am surprised from, or I am surprised with. So the answer will be I am surprised at. By तब होता है जब कोई आता है, किसी के अराइवल से हम सरप्राइज होते हैं, तो तब वहां पे हम लोग बाय लिखते हैं. Find the most appropriate adjective to fill the blank. Kunal is wiser and dash than his sister. More intelligent, intelligent, most intelligent और least intelligent. So the दो के बीच में कंपेयर होता है तो more वाला लगाएंगे ना, more intelligent. What poetic technique is used in the expression strings of broken lyres? Allusion, simile, personification और onomatopoeia. So यहाँ पे onomatopoeia कोई कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसा साउंड और वर्ड रिजेंबल नहीं हो रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, सिमिली के लिए एज सच एज वाले वर्ड्स भी नहीं है, तो बचता है एलुजन. आयर ग्रीक माइथोलॉजीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है. The adjectival form of the word mountain is mountainous, 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 or mountainous. So it is mountainous. You have put an innocent man behind the bar. Hang your law. Cried the accused. The indirect form will be. तो ये चार आप देख सकते हो ऑप्शन. And the right one is the first one. The accused cried that they had put an innocent man behind the bar and wished to hang the law.
Lucy's glorious and unparalleled beauty is expressed by comparing her to a star when only one is shining in the sky, rose hidden in the bushes, glow warm or none of above. So she is compared with a star when only one is shining in the sky. So Lucy is like beauty, very unparalleled, unmatched beauty. Which line best represent the reality of death in the poem A slumber did my spirit seal? तो उसकी चार ये लाइन्स हैं चार और उसमें से कौन सी लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को सो आई हैड नो ह्यूमन फियर्स शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स with rocks and stones and trees. So the answer is no motion has she now, no force. What was a vehicle of necessity for Mrs. Thorolo? So whether it is her rusty bicycle, a cart, an old taxi, or motorcycle. So she used a bicycle. The third stanza of The Last Ride Together begins with Homeric simile, an extended nature imagery, a biblical allusion, a lover's address to the lady. So this is the lover's address to the lady. The darkling thrust opens with dull, sober images and metaphors, sparkling natural beauty, horrors of warfare, or the poet in a joyous mood. So the poem starts with a dull, sober images and metaphors, where beauty cannot keep her lustrous eye. Whom does Keats refer by the word beauty? Now ये ओ टू नाइटिंगल की लाइन है और यहाँ पे ब्यूटी को किस चीज से हम किस चीज के लिए वो सिंबलाइज कर रहे हैं किस चीज के लिए वो यूज कर रहे हैं या रिफर कर रहे हैं सो द ब्यूटी ऑफ नेचर द ब्यूटी ऑफ नाइटिंगेल और द ब्यूटीफुल वेमेन whose beauty is evanescent Keats lady love सो ना यहाँ पे जो ब्यूटी है वो ऐसी ब्यूटी की बात है जो कि फेड करती है हाँ एक विमेन की ब्यूटी जो कि अपने लस्ट्रस आई को कीप नहीं मतलब अपनी ब्यूटी को सस्टेन नहीं कर पाती है हाँ एक ह्यूमन अपने ब्यूटी को कभी सस्टेन नहीं कर पाता क्योंकि वो फेड होता रहता है वो कभी हमेशा नहीं वही नाइटिंगेल की ब्यूटी जो है नाइटिंगेल के सॉन्ग की जो ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग रहने वाली है हाँ तो यहाँ पे वो द ब्यूटी ऑफ वुमेन हुज ब्यूटी इज इवांसेंट जो कि वो खत्म हो जाती है उसकी बात हो रही है व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड राइटिंग whether it is clear and logical thinking, reading books of other writers, taking ideas from newspaper, copying style of writing from famous authors. So it is clear and logical thinking जब हम प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसके बाद जैसे हमको कंटेंट की बात आती तो हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं हाँ कि न्यूज़पेपर से हम स्टोरीज वगैरह ले सकते हैं बट यहाँ पे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग Keats in Ode to Autumn sees nature not as abstract force or energy, but as a human manifestation. This is known as mythopoetic power, imaginative power, creative power और metaphysical concept. So ये ऐसा देख पाना कि किड्स के इमेजिनेटिव पावर को दिखा रहा है Bluntschli mistook Rena's age and called her a schoolgirl of 17. What was revealed to be her real age? So whether Rena is 22, 18 years, 23 years or 20 years. So she is 23 years. So Della made dinner for Jim at 7 o'clock in the evening, 8 o'clock in the evening, 9 o'clock in the evening or 6 o'clock. So she made dinner for Jim at 7 o'clock. Improbability or improbabilities that is are found in C to conquer is or are. So जो misunderstandings है उसकी बात हो रही है Hensing and Marlowe taking Mr. Hardcastle's old house for an inn, garden scene, taking Mr. Hardcastle for a highwayman by his or all of these. So अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले में हमें जो एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या इनप्रोबेबिलिटी देखने को मिलता है वो हेस्टिंग और मार्लो का है जो कि मिस्टर हार्डकासल के ओल्ड हाउस को एक इन समझ लेते हैं लेकिन इसके साथ गार्डन सीन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिस्टर हार्डकासल को जब हाईवे मैन की तरह ले लिया जाता है तो ये सभी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रोबेबिलिटीज देखने को मिलती हैं आपको सी स्टूप्स टू कॉन्कर में जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉफ्टर और कॉमिक सीन क्रिएट होता है तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा द वेजिटेरियन बर्गर tasted like salted cardboard. The underlined word is an transitive verb, intransitive verb, linking verb, or none of above. So it is a linking verb. Choose the correct alternative. The Rajdhani Express had left when he reached the station, when he had reached the station, or when he will reach the station, or none of these. So it is very simple. It is first जब हम past perfect रहता है तो उसके साथ
पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज होता है. सो व्हेन ही रीच द स्टेशन. I have never owned a flat before, but I am considering buying one. The statement is an example of complex sentence, compound sentence, simple sentence, compound complex sentence. So now simple sentence तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ दो sentences देखने को मिल रहे हैं clearly. Now fan boys ये याद रखोगे आप. So ये इसमें आप देखोगे बी फॉर बट होता है. तो जहां पे भी बट आया that means वो एक compound sentence है. Correct the following sentence. All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. So यहाँ पे जब हम सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ ऐसा कुछ लिखते हैं तो वहां पे लॉस में नहीं होगा, वहां पे एस मीन्स ये हो जाता, ये सही रहेगा सिस्टर्स इन लॉ. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन ए जो है वो गड़बड़ है. द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कवर्ड इज कवर्डली, कवर्डियू, cowardice और covered life. So it is cowardice. So gentle reminder, हमारा कल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है एंटी ग्रेड का. कल हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेसन रहा कि हम उसमें क्या करने वाले हैं. बेसिकली हम जो भी है एल्टी ग्रेड की हम तैयारी करवा रहे हैं उसमें. और जितने भी लोगों जिन भी लोगों ने एल्टी ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे. टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा. साथ में आप ये क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हो. और वहां पे हमारे डेली क्विजेस जैसे एसएलएसटी के लिए चल रहे हैं वैसे हमारे डेली क्विजेस हमारे एल्टी ग्रेड के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स.